So hello all, a very good morning. Uh, so today we are going to just give you a brief about anthropology. Okay, so most of you people have decided that you will be choosing anthropology as an optional for your civil services. Some of you might be in doubt that between anthropology, sociology, PSIR, or some other subject. Okay, so in order to decide that, I am not going to tell you कि anthropology ही select करो, but I am going to tell you कि anthropology first है क्या, and then if you select anthropology, what are certain advantages that you might get, okay, and then the third thing that I will be covering here is how we are going to proceed here in our lectures. Okay, so this will be the short summary, or this is the overall map in which we will be covering the points. I'll keep this discussion as short as possible and will focus more upon your questions. आप लोगों की जो queries है उस पे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे और भी orientations वगैरह देखे होंगे. Okay, so I'll try not to repeat things. Thank you. At least one girl. थोड़ा sex ratio balance हो रहा है. Okay. So let's start about what is anthropology. Okay, because most of you or almost everyone here is completely new to this subject, and that is why the first question we should be talking about is what is anthropology. I am not going to talk about the scholar definitions जो हम लोग को course में पढ़ना है, but in general what is anthropology? Anything that is related to being human, okay, comes under anthropology. Okay, now one scholar is Aristotle. One of the most famous definition of anthropology is that anthropology is a gossip about human beings. And I am saying that it's a gossip, or when we gossip. So gossip can be about anything. It can be about past, it can be about present, it can be about future. It can be about the physical being, it can be about the mental behavioral aspects, it can be about the language that I speak, it can be about the food, anything. We gossip, we do engage in gossips, and we know that कि gossip का कोई boundary नहीं होती. Okay, we can talk about anything about anyone, irrespective of whether we know about it or not. That's why it is called as gossip. It's not called as an intellectual discussion. Okay, and he is saying that yes, when we are gossiping about human beings, it comes under the domain of anthropology. And that is why when you see anthropology के domain को, so there are four major subdivision of anthropology. Okay, the first one is socio-cultural anthropology. The second one is, I'll cover each of them, physical anthropology. The third is archaeological anthropology. And the last is linguistic anthropology. So socio-cultural anthropology in general talks about the cultural aspects of human being. Okay, the cultural or social aspects of human beings, how we behave, how family, religion, marriage, kinship, economy, polity, everything is something that is created by human beings. Okay, we created it. It was not if we believe that God exists, when God sent us to this earth, or when God created any kind of life, okay, He did not give us a manual. Okay, this is the rule book. You go on earth and you will be behaving like this. The manual was created by us, right? We will be behaving like this, we will be respecting our parents, we will be marrying in such a way, the marriage should have so and so rules and regulation, the food habit should be so and so. अब ये मैनुअल क्रिएट कैसे हुआ, और यही मैनुअल है जिसके हिसाब से हम लोग जी रहे हैं, राइट? So ये मैनुअल क्रिएट क्यों हुआ? What were the conditions that helped us create this manual? When this manual which was created was not divine, then what forced us to create such kind of manual? There can be some environmental pressure. Okay, पानी की शॉर्टेज है या बहुत ज़्यादा हीट है, तो हमारे कपड़े डिसाइड हो गए कि we will be wearing some cotton clothes, we will be wearing some white colored clothes, not dark colored, right? पानी की शॉर्टेज है, उसके हिसाब से हमारे आइडियाज, जो क्रॉप्स हैं, जो फूड है, वो डिसाइड होगा, राइट? सो द मैनुअल was created due to some kind of external pressure.
Okay, it might be climate, it can be the topography, it can be something else, right? Now, the second thing comes, which is the most important aspect, is physical anthropology, the biological aspect of being human being. So we know that we have not been created like this. Okay, our entire journey is from an ape to a man. And if we move somewhat backwards, so the life started with a single cell on earth. You must have read this in means 10th से पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा. एक single cell organism, that is amoeba. Okay, a prokaryote. This is how the life started, and धीरे धीरे ये evolve होते होते multiple species came into existence. Then came apes, and out of that apes evolved human beings. Okay, so our journey from apes who were quadrupeds. Quadrupeds means walking using 4 limbs to walk. All the limbs were used for locomotion. Okay. Now to being a biped, wherein only 2 limbs will be used for locomotion, and now we have these 2 limbs which are free with opposable thumb. Now we can use these limbs to manipulate objects. And the moment we started manipulating objects, we started creating tools, right? So started creating tools, we discovered fire, we were able to hold things, grasp things, our defense became superior, right? And yes, there was a time when we were running from tigers, and now there is a time when we are saving the tigers. Imagine how our forefathers seeing us from above will be very happy. They were running from the tigers in the forest some 10,000 years back, and now we are creating national parks so that the tigers can be saved from us. Okay, so this is the journey that we have covered in millions of years. Okay, we became the most dominant species on earth, and this entire journey in which we have evolved biologically in terms of brain intelligence हमारा काफी बढ़ा, in terms of body anatomies, body features have changed a lot. Okay, so this will be covered under physical anthropology. Now the third thing is archaeological anthropology, third subdivision. In archaeological anthropology, since I am telling you that we will be covering our entire journey from ape to human beings, or we have to overview it. When I am saying that we have to overview, we have to look at our past. We have to reconstruct our past. And in order to reconstruct our past, we have to study the past remains. And that comes under archaeological anthropology. We will be, so there was no CCTV camera 10,000 years back, right? So to record what our forefathers were doing. Now in order to understand what was their journey, how they developed, how tools came, how agriculture came, and how the kind of society that we are living right now came, we have to reconstruct the material remains from the past. We will be using some analogies, we will be using some assumptions, but we will be doing this under archaeological anthropology. And the last one is linguistics, linguistic anthropology. So what makes us the most unique species on earth? The one thing that makes us the most unique or the most superior form of species other than our physical ability, अगर हम सिर्फ अपनी physical abilities को देखें तो we are far, means कुछ abilities में we are inferior than animals. Okay, we are not the fastest runner. Okay, we are not the tallest or the strongest species. But one thing that makes us the most unique is the ability to speak, the language. Our past experiences can be recorded, and our past experiences can be recorded means our knowledge can be stored. And when our knowledge can be stored, it can be passed on to the next generation, to so on and so forth. And that past experiences has helped us build the entire sciences. ऐसा नहीं है कि हर बार कोई आदमी पैदा हो रहा है तो he is starting from zero. Okay, no. We have our past experiences, and that's why we are in a state of progress scientifically, in terms of medicine, in terms of technology, what not.
We are in a state of progress, and all because that we are able to store our knowledge and we are able to reproduce it. And that is why linguistic anthropology will help us understand the past of language, how language actually came into being, the biological aspects, that is what physical changes that happened in during the course of our evolution that made us or gave us the capability to speak. Okay, and also the cultural aspects of language. So these are the four main domains under which we will be studying. Okay, and then the last one is applied anthropology, because any discipline is useless unless and until you are not able to use that knowledge for the welfare of the people. Okay, तो इसी वजह से जो भी हम लोग theoretically पढ़ेंगे, we will be trying to use it, या उसका रेलिवेंस देखेंगे आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर रहा है. And that is what comes under applied anthropology. So you will be reading anthropology, you will be working as an administrator, okay, on the field. So you will be using the knowledge that you have acquired here in anthropology for welfare of the people. Okay, and that comes under applied aspects. So these are the domains that we will be covering. So let's start with our journey from being ape to being a homo sapiens. ऐसा क्या हुआ कि हमें सोसाइटी बनाने की जरूरत पड़ी? What actually happened? और या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा था that we started to live in society and that gave us better survival opportunities? Maybe this. Okay, so this was the basic question, that we started to live in social groups, our social bonding was very strong, and that helped us survive relatively more than the species who hunt in isolations. Okay, and in this journey, suppose मतलब आप देखते हो बाकी species वगैरह like stray dogs or various other animals that are moving on road, they usually do not roam in groups. राइट, ऐसे नहीं कि कुत्ते झुंड में चल रहे हैं या गाय भैंस झुंड में चल रही हैं, ऐसा नहीं होता. राइट, एंड एवरी टाइम यू सी देम दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड. सुबह उठते हैं, खाने की तलाश में घूमते रहते हैं. ओके, दे आर नॉट लाइक कि आज जो आपके आसपास की गली का कुत्ता है वो ऐसे घूम रहा है कि आज यार आज बोर हो गया हूँ, लेट मी टेक अ वॉक. ओके, आज मैं इस गली से बोर हो गया हूँ, मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ऐसा नहीं होता. ओके, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड. Always, and that's why for search of their food they have their defined territory, they will try to protect it, and you might have seen it, right, कि अगर कोई बाहर का कुत्ता उस एरिया में घुसने की कोशिश करे, they start barking, and सुबह उठे तो खाने की तलाश में और सो जाएंगे. And second thing that they are searching is mate, food, mate and space. These are the three things that any species would look for its survival. The first one is for survival of self, that is food. The second one is to pass on its genes to the next generation. For that they require mates. And the third is space, in order to ensure the availability of both the two, the first two, food and mate. So they will be always in search of these three things, or they will try to conserve these three things. And the same was the case with human beings. We also, like other species, are in search of these three. But then you must be thinking like, कुत्ते की जिंदगी तो कितनी आसान है. He has to get up in the morning, search for food, sleep. उसको कोई टेंशन नहीं है यूपीएससी की. Okay, or he doesn't has to go to school, college, nothing like that. Chill life है उसकी. Why are we preparing for civil services then? Okay, अपनी पूरी रातें खराब कर रहे हैं. सोशल जो मीडिया है वहां से कट ऑफ हो गए. sacrifices and sacrifices. Again, this is ultimately for these three things only: food, mate and space. We want to survive, and we are trying to ensure better survival by trying to get something which gives us stability. प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते? स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, राइट, डोमिनेंस नहीं है. और डोमिनेंस क्यों? बिकॉज दिस डोमिनेंस विल एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी. दिस डोमिनेंस विल एंश्योर
availability of mate. This dominance will ensure space. Ultimately, whatever we are doing or whatever culture we have, the behavior that we have is to make sure these three things do exist. We survive, our family survives, और वो सर्वाइवल की श्योरिटी होनी चाहिए इन तीनों की अवेलेबिलिटी के साथ साथ. ओके, सो एनीबडी हु वाज इन दिस मिथ दैट यू आर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट टू सर्व द नेशन, उसको तो भूल जाओ आप. लेट्स सेव दैट आंसर फॉर इंटरव्यू. ठीक है, सच्चाई एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही है दैट यू ऑल आर हियर टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मेट एंड स्पेस. एक परमानेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लुक फॉर सर्टेन काइंड ऑफ, हम अपनी लाइफ में थ्रू आउट अपनी लाइफ में रिस्क को मिनिमाइज करेंगे. एनी काइंड ऑफ रिस्क that might threaten us, that might threaten our children, we will always try to minimize it. Why to minimize it? Again, एक species की success के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, survival. And survival by two ways, survival of self and survival of the next generation, through which we will be passing on our genes to generation and so on and so forth. Okay, and when we started developing culture, we became superior than other animals, okay, because these cultural behaviors were then giving us the experiences like tools बन गए. अब हमारे ability to hunt, ability to gather food became more stable, right? अभी हमारे पास, हम ज़्यादा बड़े एनिमल को हंट कर सकते हैं, अपने से ज़्यादा ताकतवर एनिमल को हंट कर सकते हैं. फायर, ओके, फूड बिकेम सॉफ्टर, और ऑल्सो इट गेव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स. हम फॉरेस्ट में थे, ओके, वी डिडंट हैव लाइक बिग स्पीयर्स और लाइक गन्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट फायर वाज द फर्स्ट डिस्कवरी दैट एंश्योर्ड सक्सेस, सर्वाइवल सक्सेस ऑफ होमो सेपियंस. हमारे पास फायर की डिस्कवरी हुई, हम लोग बेसिकली क्लाइमेट, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को फाइट कर पा रहे थे, राइट, वी वर एबल टू वॉर्ड ऑफ other animals who could have attacked us. And throughout this cultural discoveries, our stability became more and more stable, or our survival became more and more stable on this earth. And gradually we became one of the most, or the most dominant species on earth. So we have, our earth has seen 6 mass extinction. Okay, अभी 6th phase of mass extinction चल रहा है. Okay, but we never imagined that Homo sapiens will be extinct at some point of time on earth. Why? Because हमारा जो culture है, that has given us the fluidity to adjust to any kind of extremities. अब वो बात अलग है कि अर्थ ही खत्म हो जाएगा, but we are also looking for alternatives. Even when the earth will go away या vanish, खत्म हो जाएगा, we have started to look for other planets like Mars. Okay, we have, और जो आज की fictional movies है, science fiction है, वो कल की reality है. We have seen that the movies, science fictions of 1970s are today's reality, and science fiction of today may be reality 100 years later. So we again, Mars को खोजने का भी purpose क्या है? It's not science, it's not curiosity, it's to make sure that we survive, we minimize the risk. And this entire journey of minimizing the risk, creating alternatives, creating cultural solutions to the problems, that has actually made us the dominant species. अब कुछ चीजें ऐसे देखते हैं कि, और हमारे जितने भी अभी के एक्सपीरियंसेस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से शेप्ड अप है. अब लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस प्लीज. आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा दैट व्हेन यू गेट अप एट 2 PM, कई बार हो जाता होगा, दोपहर में 2 बजे उठे, पूरा दिन खराब हो जाता है, मूड खराब रहता है. हैव यू नोटिस्ड इट? अब कुछ लोगों की बचपन से आदत हो गई होगी या फिर कॉन्शियसनेस ही खत्म हो गई हो, बात अलग है. बट अभी आप 2 बजे के आसपास दोपहर में उठो या 2-3 बजे, यू विल हैव लाइक, आपका मूड बहुत ऑफ रहेगा. हैव यू
try to find out what has actually happened. हो सकता है आपने टाइम ओवरऑल सोए भी कम हो सकता है 4-5 घंटे ही सोए हो. You might have slept at 8 a.m. in the morning. Okay, पूरी रात भर पढ़ाई की हो. But still, if you get up at 2 p.m., 3 p.m. in afternoon, your mood will not be okay. You will feel like restless. The reason is from our past. When we were hunter-gatherers, when we didn't discover fire, we had to hunt in the daytime. We have to hunt in the daytime, right? And अगर उस दिन आप लेट उठे कभी भी तो आपको बिना हंट के सोना पड़ेगा. बिना हंट के सोने का मतलब you will have to sleep empty stomach, and that would create a feeling of uneasiness. And this experience has been recorded in our body, and this still makes us feel like that. The moment we get up late or get up at 2 p.m. तो वो जो जीन मेमोरी है वो अभी भी एक्टिव हो जाती है, एंड दैट मेक्स अस फील अनईजी, रेस्टलेस. ऐसा लगता है कि शायद हमें आज भूखा सोना पड़ेगा. ऑल्दो दिस कंडीशन हैज नाउ गॉन, हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा, राइट? नाउ जस्ट टेल मी, हम सबको फोबियाज हैं. फोबियाज एज ए फियर, ओके, और कुछ पर्टिकुलर एनिमल से फोबियाज बहुत ज्यादा है, इजंट इट? कैन एनी मीन्स आप लोगों के सबसे बड़ा फोबिया किस एनिमल से है? स्नेक. स्नेक. एनीबडी एल्स? कोई और जानवर? अरे बोलो, कोई बात नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू. मकड़ी, राइट? हाँ, लिजर्ड. हाँ, सेंटीपीड्स, ओके, ठीक है. अच्छा, आप में से कितने लोगों ने स्नेक को एक्चुअली टच किया है, फिर जिसको स्नेक से फियर है? ओके, फियर ऑलमोस्ट सबको है, टच मुश्किल से 1-2 लोगों ने किया है. बट इफ आई आस्क यू टू फील द snake skin, do you have any feeling of snake skin? कुछ तो स्नेक की स्किन को आपको फीलिंग होती होगी कि कैसी स्किन होगी. हाँ, yes, but you haven't touched it, you haven't felt it. Why you all have phobia of snake or lizard or spiders? It's because when we were hunter gatherers, we used to put our hands in the bark of the trees जहां पे चिड़िया अंडे देती थी, to get that eggs as our food, and these were the areas where most of the snakes, lizards, the spiders were living. And accidentally हम लोग इन्हीं को पकड़ते थे, और हमारे को सबसे ज्यादा बाइट्स भी इन्हीं से मिली हैं throughout our evolutionary history. And that's why without any live experience, we still have the most fear from these animals only. Snakes, spiders, lizards. Okay, क्योंकि हमारी पूरी evolutionary history ही वैसी थी. जब हम hunter gatherers थे, forest में रहते थे, अंडे पकड़ते थे या पेड़ में हाथ वगैरह डालते थे, यहाँ पे हमको अक्सर snakes ही मिलते थे या फिर lizards और spiders. And that's why we were bitten off by them. And that's why the most fearful of all the animals, हम लोग को इनसे ही डर लगता है. Although we are not experienced, but still we have it. Now, some other common experiences that we have developed because of our evolutionary history is like boys के case में, if we say color का idea. So boys are very weak with colors, and you can find it, you can experience it. Just go with a woman or girl for shopping. She can tell you different between 3 types of green or 3 types of orange, and for you for the boys specifically, even me, all the oranges are same till the time they are kept side by side, and then we will be able to understand the difference in the shade. Or else we find all the oranges are same, all the greens, but a girl can tell you 10 shades of green, कि फ्लोरोसेंट ग्रीन होता है, स्काई ग्रीन होता है, एंड पता नहीं कौन कौन से ग्रीन होते हैं, राइट? सो व्हाट मेक्स गर्ल्स गुड एट कलर्स? अगेन द स्टोरी गोज लाइक हंटर गैदरर्स के टाइम पे द बॉयज और द मेल्स, इट्स बिलीव दैट वेर एंगेज इन हंटिंग, while the women were engaged in gathering.
gathering fruits from the trees, seeds, nuts and all that. And that's why their vision apparatus for color developed more than the males, because they used it to identify whether the fruit is ripe, whether the fruit is poisonous or not, whether it's ready to eat or not, and that's why their sense of color developed more than the sense of color of a male. But there is a counterpart also, that it's generally believed that the girls are very much bad at driving. This is not me speaking about it, so don't take me as a male chauvinist कि ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है. But it is believed that कि डायरेक्शन सेंस बहुत वीक होता है, रास्ते बहुत ज़्यादा याद नहीं होते गर्ल्स को. ओके, एंड इफ यू इंट्रोस्पेक्ट यू माइट फाइंड इट ट्रू टू सम एक्सटेंट. द रीजन इज द vision sense of men developed more because of hunting, because we have to track a moving object and hit it or trap it, or we had to run behind that prey, and that is why the direction sense, the sense of tracking a moving object, developed more in men than women. So these are some general ideas. You have to understand that our evolutionary experiences has shaped our present behavior. Okay, but initially when we started evolving from apes to men, there were certain environmental constraints that were shaping our evolutionary direction, like bodily changes जो हमारे अंदर आएंगे. तो it was maybe some mutation would have happened जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ special power आ गए. Maybe from quadruped we might have become biped, and this bipedalism provided us certain kind of advantages in the same environment, and that is why it was selected by the nature. You must have heard the term survival of the fittest, Darwin's term. Or survival of the fittest means there is a group of people, उसमें से कुछ लोगों के पास कुछ specific advantages हैं that might give them certain advantages in survival for the environmental constraint, and they will be the one who will survive and the rest will die out. This is survival of the fittest, and this is also happening now. COVID हुआ 2020 में, many people died, but many of them who were exposed to COVID, they were able to overcome that virus and they survived. What is happening here? The unfit population got eliminated and the fitter ones were selected. So again we are in the same race of evolution where only the fits will survive, or the survival of the fittest. But now the challenges are relatively lesser than they were 10,000 years back or say million of years back, because अब तो हमारे पास कई सारे cultural solutions भी आ गए हैं which were absent then. We now have vaccines, we now have hospital care, medicines, a lot of things which were absent. तो उस समय तो completely हमारी body की strength ही determine करेगी whether we will survive or not. But now we have some external aid, some cultural solutions also that can help us survive. ऐसा नहीं कि कोई बीमारी होगी तो मर ही जाएंगे, right? We might survive also because of the medical treatment that we might have. So ultimately what we are seeing is कि our evolution is not only biological but biocultural evolution. That means our cultural changes or our cultural capabilities have given us power to postpone or to suspend the biological changes. अब पहले तो क्या था कि कोई बीमारी होगी, if your body is capable enough to fight that disease, you will survive. That means your body will have antibodies to fight off that microorganisms. अभी क्या है कि even if your body is not capable enough, you might get some good hospital care or treatment, you might survive. So here earlier the cultural solution was absent, but now the cultural solution is also
helping us to survive the challenges. And that is why biocultural evolution is something that we are supposed to read in anthropology. Okay. Now धीरे धीरे हम लोगों ने कल्चर्स को डेवलप करना शुरू किया, and this culture actually shaped our behavior. So if I define culture in a very layman term, so culture is something what we do, what we think, and how we, or what we believe and how we behave. Okay, so this is what is culture. हम क्या करते हैं, हम क्या बनाते हैं, and how we think or what we believe. And most important part of what we believe is something that shapes our behavior. हमारी belief ही हमारे behavior को shape up करती है. So just to prove this point, let's talk about, you can see these pictures. If you see this photo, this is the image of a thin girl, and this is the image of a relatively healthier girl or fat girl. Who of this is more beautiful to you? Be honest. Huh? Thin. Everybody agrees to it, I guess. So what made you realize or believe that thin is beautiful? Actually, this is our culture, the kind of socialization that we have been exposed to. So this woman, the healthier one, the fat one, belongs to a tribe in Niger. Okay, and here fatness is the sign of beauty. You will be considered beautiful if you are fat, and that's why the women, in order to be fat, they are fed with porridge, milk products from the very early days, so that they become fat. And because fatness is a sign of beauty, there are poems written in their culture talking about the stretch marks. Stretch marks here on the arms, okay, they praise it. They say that everybody can have stretch marks, or every woman can have stretch marks on the waist, that comes due to pregnancy. But very few can have the stretch marks on the hands, that is because of fatness. Okay, अब ये यहाँ पे fatness, why it is considered to be a sign of beauty? Again remember, survival for food, mate and space. So here, wherever there is a shortage of food, or in whatever community there is a shortage of food, fatness is generally considered to be a sign of beauty, because that ensures a higher chance of success in reproduction. This woman is relatively healthy than the ones who are deprived of food, and that's why fatness is a sign of beauty there. And in the same way, there are like different images of the most beautiful woman or the symbol of beauty in different cultures. Okay, this is the tribe from Ethiopia, where the women, they slowly start to extend their lips by putting small rings or small diameter, and gradually they start increasing the diameter of those rings. The bigger this lower lip, the more beautiful they will be considered. The same is the case with this community from Thailand. So they start to extend their neck, increase the size of their neck by putting the copper wire around their neck. And धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होंगे, वैसे ही copper wire की length बढ़ती चली जाएगी. The greater the neck, length of the neck, the more beautiful they will be considered. But if you see their history, you will find that this process actually started as a survival mechanism, because the area in which they were living, वहाँ पे tiger attacks करते थे. And since tiger used to attack, so they used to attack it here only. गला दबाते हैं tiger or lion. And that's why in order to protect their neck, they started wearing this copper wires around it. And later on it became a sign of their custom and a symbol of their beauty. Okay, so this is how our belief system actually is shaping our
behavior. Now let's talk about this. These are the men who are wearing something which is against the idea of gender, masculinity, isn't it? To wear a frock or this, and we have this our own superstar Ranveer Singh. So who defies the norms of gender, right? So ये standard किसने set किया? Whether it was a divine manual that was given to us, कि बेटा तुम नीचे गए हो तो तुमको इस तरीके से behave करना होगा, or is it something that was written by us only? So you have to understand the difference between sex and gender. And sex is something what we biologically are. I'm a male, somebody is a female. That is the biological idea of one's identity, that is sex. But then comes the cultural idea, that is gender. How a particular sex is supposed to behave, that is called as gender. So male is supposed to behave in a masculine manner and female in a feminine manner. And that is why, so masculine की कुछ values हैं like courage, strength, dominance, aggression. All the animalistic values, they are associated with masculinity. And what made us human is the feminine values: love, care, warmth, happiness, joy. Okay, these are considered to be the feminine values. So female are supposed to behave in a feminine manner and have these or cherish these kind of values, while male are supposed to be cherishing the masculine values. And the one who does not follow this or who crosses the boundary of gender is called as transgender. Masculine, feminine, the one who is crossing that boundary is the one that is called as the trans. Okay, and when somebody is defying these norms, we consider this as deviance. We don't feel it normal. But ऐसा क्या है कि ये कपड़े लड़के नहीं पहन सकते? We created this norms, right? कि the female should be wearing so and so types of clothes and male should be wearing so and so types of clothes. And the moment this change, okay, we see it in the form of deviance. So ये culture हम लोगों ने अपने ऊपर impose किया. This is a kind of manual how we are supposed to behave. Code of conduct है ये. And this code of conduct should be followed by each and everyone. So we will be seeing in anthropology, when we will be beginning anthropology, so we will be starting with theories. So I'll tell you several ideas of culture. Okay, how culture evolved in stages, or the functions that the culture serves, or the structures created by culture, and all so on and so forth. So different ideas, different opinions on culture. So this is the most important part of us being humans. From the day one, since we are born, we are in the process of enculturation. हम लोग को बचपन से सिखाया जा रहा है कि तुमको ऐसे behave करना है. You should behave like this. You should not do this. Do's and don'ts we are learning from the beginning. Why? Because we are trained to be the part of the society. Okay. Without that cultural training, we cannot become a dignified member of the society. Right? Then you see this picture. What do you see? This is the picture of a porch, balcony जिसको कहते हैं, where people, family members, they are sitting together, some reading newspaper, some sitting idle thinking of his crush, something like this, or maybe अपना breakup हो गया, उदास बैठा हुआ है. But people are sitting, and this was something that was a part of almost every culture. कि घर के बाहर एक बालकनी होती थी, कुछ सीट्स लगी होती थी, झूले लगे होते थे या जो भी पेड़ पौधे. And this was the way people used to communicate with others, or at least spend their evening times sipping their tea from their cups, okay, interacting with the family members. But now what has happened? Technology interfered,
आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है, ओके, एंड डिजिटल इंट्रूजन हैज़ हैपेंड. सो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाहर तो बैठ नहीं सकते, वी स्टार्टेड यूजिंग AC और कूलर्स. In that case, we have to keep our houses or rooms shut so that the rooms become cool. अब ये porch का idea खत्म होने लगा, and plus space का constraint है, and that's why this porch started to means porch का जो culture था हमारे household में वो सब खत्म होना शुरू हुआ, बाहर बैठना लोगों ने बंद कर दिया. And then the third intrusion was that of WhatsApp, internet, and अब कम्युनिकेट फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो कम्युनिकेट तो करना है. देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग थ्रू इंटरनेट, इवन विद द नेबर्स एंड इवन विद द फैमिली मेंबर्स. एवरीबडी हैज अ फैमिली ग्रुप ऑन देयर व्हाट्सएप, जिसपे सुबह सुबह हर कोई गुड मॉर्निंग भेजता है, इजंट इट? यू माइट बी लिविंग टुगेदर ऑल्सो, बट यू स्टिल विल बी रिप्लाइंग देयर ओनली. यू माइट नॉट बी सेइंग गुड मॉर्निंग टू ईच अदर फेस टू फेस, बट व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई जरूर जाना चाहिए. एंड एवरीबडी हैज सम वेरी गुड, हर कोई एक बहुत मोटिवेशनल कोट के साथ गुड मॉर्निंग भेजता है रोज सुबह, भले उसको कभी पढ़ा ना हो या प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है. So this is how technology actually is modifying our culture, and that is why to understand the interaction of technology with human beings, there is a different branch of socio-cultural anthropology that is called as cyborg anthropology. So you must have heard this word cyborg. So cyborg means something external has been created keeping in mind, or it has been designed keeping in mind the body structure of human beings, so that हम इसको यूज करें अपने साथ और वो हमारी बॉडी का एक इटर्नल पार्ट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज वेयरिंग दैट फिटनेस वॉच or maybe smartphones. So now what has happened is we have dual personality. So your smartphone has a lot of information about you. If I keep on writing that information, that will create a pile of papers. Imagine that information gets lost. Okay, वो कहीं ना कहीं गायब, आपका फोन चोरी हो गया या आपका लैपटॉप चोरी हो गया और वो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी फोटोग्राफ, सब कुछ is lost. Then you will feel that some part of you is missing, isn't it? Not that physical part, but there is a digital self that has been created now. So just like we maintain our physical self, brushing our teeth, taking bath, clothing, so that is how we maintain our physical self. We also keep on maintaining our digital self. रोज डीपी अपडेट करेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे, ओके, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, राइट? कोई भी नई अचीवमेंट होगी तो घर वालों को बाद में बताएंगे, पहले ऑनलाइन पोस्ट करेंगे. सो दैट इज हाउ वी आर मेंटेनिंग अवर डिजिटल सेल्फ. सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी is actually creating changes in our culture, which in turn is changing our behaviors. Okay, so this all we will be seeing in socio-cultural anthropology. Now let's see this picture. You can see these two guys, or one girl and a guy. So they both have tattoos. One is having a tattoo on her face, the other is also tattoo on all the parts of the body. Okay, so for this, आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि ये कोई मॉडर्न सोसाइटी की लड़की है और फ्रॉम ए सिंपल सोसाइटी, ए ट्राइबल सोसाइटी और ए सिंपल सोसाइटी? एंड दिस डेफिनेटली लुक्स फ्रॉम अ सोसाइटी हु इज सो कॉल्ड मॉडर्न 21st century, isn't it? So can we say that these two are equally fashionable? दोनों के लिए फैशन है टैटू बनाना? Actually, tattoo is a form of art. It's a way of telling stories. And for these people, simple societies, it's a kind of rite of passage that marks the change in status of the individual. So from girl, when the woman is not fertile enough or she has not achieved the state of puberty, she will be called as a girl.
But the moment the girl achieves the state of puberty, that marks a biological change of status. Now she is fertile enough, she can reproduce, and that change of status biologically has to be replicated culturally also. So this tattoo marks that she has attained the state of a girl who is fertile enough to reproduce. So एक culturally एक transition phase होगा, rite of passage. You must have उपनयन ceremony, जनेऊ पहनते हैं, right? That is also a rite of passage. It is not something that you are wearing it ritually. According to Manusmriti, a guy or a child is considered to be a born Shudra. No matter whatever caste you are born in, the child is considered to be a born Shudra. So biological birth has happened, but the social birth will happen after that Upanayan. जब बाल छिलवा दिए जाएंगे और धागा पहनाया जाएगा. From then on you will be मुंडन जिसको कहते हैं. From then on you will be considered to be the part of your society. The caste status will be given to you. Okay, that marks the change in the status of that individual in the society, isn't it? But here in this case, this tattoo is a sign of fashion. Not just fashion, it's a symbol of, sometimes a symbol of identity. Maybe you belong to a particular cult, you belong to a particular, you support a particular sports team, you might be member of a particular criminal gang. So these are the ways of telling stories that have been continued since past. We have evidences of tattoos from 7,000 years back, from several excavated mummies and all, sorry 5,000 years back, wherein we have got evidences जहाँ पे एक skeleton पे कई सारे tattoos, approximately 45-50 tattoos were seen or impressions were seen. So these were the ways, these were the marks of identity that we have developed in due course of time, and they have now become the part of our culture. Okay. Now coming to this physical anthropology wala part. So this is one of the pictorial representation of our evolution. The man, our journey started from apes, quadrupeds, gradually bipedalism which improved gradually, and now we are entering into phase of obesity. So ऐसा क्यों था कि अब तक हमारे पास obesity नहीं थी and now we are entering into the phase of obesity? Anyone? Surplus, which is a very recent phenomena. Surplus तो 10,000 साल पहले when we entered into Neolithic revolution, Neolithic phase, when we started agriculture, at that point of time we started to produce something that we will not be able to consume in a go. Okay, we will be having a lot of surplus. Okay, and this surplus has changed a lot of things. How? For example, पहले क्या था कि hunt करते थे. Every day they will go hunt, kill the animal, eat, sleep. Next day again the same task, go into the forest. Refrigerator नहीं थे कि hunt करके उसको फ्रिज में लगा दिया और से 2-3 साल तक आराम से फ्रीजर के यूज करेंगे उसको. आप प्रिजर्व नहीं कर सकते थे. एंड यू वर नोमैड्स, वी वर नोमैड्स, वी कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस. एंड दैट्स व्हाई अगर हम लोग को घूमते रहना है, वी डोंट हैव परमानेंट शेल्टर, वी कैन नॉट कैरी ए लॉट ऑफ लगेज विथ अस, राइट? बट देन ग्रेजुअली we discovered that plants can be cultivated through seeds. And when we discovered it, we got to know that कि हाँ अब तो एक ही जगह पे रहेंगे जहाँ पे seeds लगा दी, वहाँ पे plants उग रहे हैं, we will be living there. And that's why physical work started to decline. And more physical work also started to decline, plus we also started to have surplus. And that has created a lot of changes in our biology.
Moreover, this surplus is the reason for a lot of other things. For example, inequality, which is a part of our society. We actually strive to maintain that inequality. आप IAS क्यों बनना चाहते हो? Why not you want everybody is, why not anybody is preferring AFHQ as the first preference? आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर भी एक सर्विस है जो आप यूपीएससी के थ्रू अचीव कर सकते हो, मीन्स जा सकते हो, ग्रेड बी सर्विस, बट नोबडी विल बी फीलिंग इट एज द फर्स्ट प्रेफरेंस. एवरीबडी वांट्स टू बिकम आईएएस, पहला प्रेफरेंस आईएएस होना चाहिए, दूसरा आईपीएस होगा, तीसरा आईएफएस होगा, फॉरेन सर्विस, एंड मे बी आईआरएस. Inequality is the inherent part of our way of life. We want to maintain that inequality. हर कोई जानता है खराब है. Everybody wants an egalitarian society, but wants to maintain that unequal status. इस सोसाइटी में मेरा स्टेटस तो ऊपर होना चाहिए, बाकी लोग egalitarian रहे कोई बात नहीं, या egalitarian by belief but not in terms of money. If I say that कि सब everybody, if I ask you कि like Elon Musk है, for example, he is having like say $200 billion of property. Let's snatch it away from him and distribute it uniformly to all the people of India. Is it a good idea? Most of you will think yes, कम से कम कुछ मिल ही रहा है, ठीक है. But the gradual step by step when I come to you and then I ask कि आपके पास भी कुछ ज़्यादा ही है, let me snatch everything from you and distribute it to the rest of the population in India. I'll feel like no, ये तो नहीं होना चाहिए. So everybody knows that egalitarianism, equality is a good idea, but nobody wants to practice it. So why in the very first place inequality came? The reason for this is surplus. Inequality का मतलब किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास relatively कम है. And when this condition will happen, when there will be more than what man can consume. And when this condition will occur? When we started doing agriculture. उससे पहले तो हम हंट कर रहे थे, हंट किया, खाया, सो गए. There was nothing, no concept called surplus. And since जब कोई inequality नहीं थी तो कोई rank नहीं थी, कोई hierarchy नहीं थी society, isn't it? But the moment there was surplus, there was unequal distribution of surplus, and that unequal distribution actually created hierarchies or ranks. Okay, so this entire journey from this apes to human beings, and जिसके साथ साथ हमारे biological evolution के साथ साथ क्या क्या cultural changes भी आए, that will be seen here in anthropology. Now second part in physical anthropology is what we study is diversity. We all are homo sapiens, कोई doubt तो नहीं है इसमें, but we all have different faces, different heights, different skin color, and this skin color is one of the major reason for the diversity, isn't it? जिसके basis पे हम लोगों ने categorization किया race. So what's the reason for this race? Is it a valid biological criteria? We will see this. Okay, so we will be seeing the biological diversity of human beings and the reason for that biological diversity. What actually led to that biological diversity? Environment, maybe people living in the equatorial regions, they had direct sunlight, and that's why skin color, dark skin color provided them protection against UV rays, and that's why a darker skin color. Okay, and people living in the cold temperate region, less melanin pigment will help them absorb the sunlight, which will help them create more vitamin D. अगर dark skin color होगा तो वहाँ पे vitamin D ही नहीं बनेगा colder regions में, because the sun rays are not direct, and that's why a lighter fair skin color in the colder regions. And also different physical features, for example like height. So this is the picture of one of the tallest community in the world, that is Maasai tribes of Africa, and इनके ही neighbor हैं the pygmies.
who are one of the shortest communities in the world, living in the neighborhood but having very different statures, different heights. What's the reason for this diversity? This is what we are going to read in physical anthropology. Environment same है अब, लेकिन फिर भी differences हैं, तो इसका रीजन होगा कुछ जेनेटिक, सम इंटरनल बिल्ट थोड़ा अलग है, डीएनए में कुछ डिफरेंसेस है, जीन्स में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अलग अलग तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो मोर और लेस सिमिलर है. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? सो इट्स लाइक कि आईफोन लॉन्च हुआ तो आईफोन के कई सारे वर्जन्स हैं, ओके, 56 GB, 128 GB, 256 and so on so forth. But overall appearance is similar. Like we have similar kind of body structure, 2 hands, 1 mouth, 1 nose, 2 ears, 2 eyes, right? Overall physical anatomy is similar, but फिर भी differences हैं. So these are the versions. Okay, and ये versions के reason क्या है? Maybe internal built or maybe the environment that might have shaped the version, or that's responsible for the diversity in the human beings. Okay, so this is what we are supposed to read here in physical anthropology. Now just these are the pictures of some burial cemeteries or burial pits in the same region. Can you see them? Can you see these all? आप लोगों को clearly visible है? If you see this, this is a single skull buried. This is a kind of mass burial. This is also a kind of mass burial but completely unorganized. If you see this, what can you interpret out of this? क्या समझ में आ रहा है? Other than this is a burial pit. Same जगह की है, same place. Exactly. Hierarchy, status. एक mass burial, that means commoners. A grand burial, that means somebody of a greater rank would have been buried, given a proper, decent, dignified burial, isn't it? और ऐसे ही कई सारे सामान जो burial pits में मिलते थे, उससे भी आपको status के बारे में पता चलेगा. And that is how you will be reconstructing the culture. कि इस point of time पे egalitarianism खत्म हो रहा था, hierarchy was started to develop. And second thing that you can see or understand is development of social bond, love, isn't it? तो अगर आप किसी को बरी कर रहे हो, if you are giving him the last rites, proper dignified last burials or last rites, that means you value that person, or that person was of very much importance to you. There was bond in the society. एंड इससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक कॉन्शियसनेस डेवलप होना दैट ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस. So first thing that we started to develop when we started to rise in the hierarchy of the species is to make sure that our life is precious. तो पहले हमने इंटर स्पीशीज हायरार्की डेवलप की कि हम ह्यूमंस हैं, हम तो इनसे बहुत बेहतर हैं, हम इनसे ऊपर हैं हायरार्की other than any species on this earth, right? And then we started developing hierarchy among us कि हम में भी हम कुछ लोग ज़्यादा important हैं, ज़्यादा hierarchy में ऊपर हैं, and they will be getting the treatment in such a way, isn't it? So this is what actually tells us the hierarchy that was present in the society. Now, let's come back to language. Please read these two statements. I'll read it. While neutralizing the terrorist, army destroyed the nearby civilian property. The second statement, while neutralizing the terrorist, there was a high collateral damage. You must have heard this term, collateral damage. Both the statements are saying the same thing. But if I say this,
या इस स्टेटमेंट तरीके से बोला जाए तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है. Collateral damage is the part of any kind of army proceedings or something like that. When I say this, civilian property खत्म हो गई, you will like army बहुत ज़्यादा injustice कर रही है, right? Okay, let me, a friend of mine actually sent me his appointment letter. He was selected in one of the most मतलब काफ़ी ज़्यादा famous MNC है Uber, आप लोग यूज़ भी करते होंगे. And he was selected as an Uber transport specialist. I was very happy. I asked, what salary are you getting? So he says that it's not a permanent job, it's a contractual job. Like a contractual job, Uber urban transport specialist. So then I asked him, what profile does his job has? So he says, I am a driver at Uber. This is the term they use for drivers. अर्बन ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट. देन एक और अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम जोमैटो. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, यू मस्ट हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम जोमैटो, स्विगी. एंड देन देर आर टू टर्म्स दे यूज इट. समटाइम्स डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, समटाइम्स डिलीवरी पार्टनर्स. सो हु आर दैट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एंड पार्टनर्स? द डिलीवरी बॉयज. ओके. So you see, just by changing, using some other phrase to say something, how the perception of that particular phenomena actually changes, isn't it? So this phenomena is called as euphemism. And this is the beauty of language. Actually, there is a hypothesis, Sapir-Whorf hypothesis, that tells us that language shapes how we perceive the outer world. हमारे सामने सेम आउटर वर्ल्ड है, बट हाउ वी परसीव इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज दैट वी यूज. सो फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, द सेम आउटर वर्ल्ड विल बी डिफरेंट प्रोवाइडेड वी हैव सम लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. ओके, सो दिस इज व्हाट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी वी विल बी रीडिंग, कि लैंग्वेज हमारे परसेप्शन को कैसे शेप करता है. And let me tell you, at some point of time I visited Amarkantak, okay, and Amarkantak के आसपास भील ट्राइब्स बहुत सारे रहते हैं. वहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है अमरकंटक में, एंड वहाँ पे भील ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया काफ़ी बड़ा है, एंड दीज भील ट्राइब्स दे हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द ट्रीज इन दैट फॉरेस्ट, एंड दे नो मोर देन, मतलब उनके जबान पे 500 से ज्यादा पेड़ों के नाम हैं फॉर अस. सो अब जैसे कि हम लोग उस फॉरेस्ट में गए, तो वी विल बी डिस्क्राइबिंग दैट फॉरेस्ट एज लाइक देयर वेर सम ट्रीज हु वेर बिग, सम वेर स्मॉल, और सम हैड स्मॉलर लीव, सम हैड बिगर लीव्स, समथिंग लाइक दिस. और दो चार पेड़ जिसको हम पहचानते हैं वो, तो हमारे दिमाग में इमेज भी वैसी ही होगी कि पेड़ हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू distinguish between them, but they know it. They know the name of 500 types of trees in that forest, and when they will be describing the same forest, the same outer reality, their description will be entirely different from what you have given, isn't it? Because they will be naming each and every one of the trees that they are seeing in their vicinities, isn't it? So this is how language, it is said, that shapes our perception of the outer world, and this is what we will be reading in linguistic anthropology. Okay, so these are the major areas that we in general we will be covering in paper 1 anthropology. Now second paper we will be using the applied aspects to understand Indian society. Indian society में दो major areas हैं, that is, one is caste, the second is tribes. So we will be using these same theories, that socio-cultural aspects or physical anthropology aspects, to understand Indian society, specifically caste, village and tribes. Okay, so that is in general what we will be studying, or what is anthropology. I think in the shortest possible time जो भी हो सकता था, I have given you a fair idea कि anthropology में क्या क्या देखेंगे. Okay, now coming back to the next point,
वाई एंथ्रोपोलॉजी, कि आखिर एंथ्रोपोलॉजी क्यों? So whenever we are choosing an optional, so there are certain criteria that should be used to choose an optional. और so what should be the first criteria? आप लोग बता दो क्या होना चाहिए पहला criteria. चलिए ठीक है, less syllabus, interest, success rate. So success rate I can say scoring, और हाँ रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, और हाँ ओवरलैपिंग, यस, एनीथिंग, टाइम कम टाइम में या शॉर्ट सिलेबस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग आप लोगों के हिसाब से कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, ग्रेजुएशन का पार्ट हो मे बी. So see, these are the two major factors. The first one is interest, and second ultimately जिस purpose के लिए आप optional ले रहे हो, that is success. You want to get maximum score so that you become IAS officer. You are not here to become an anthropologist, sociologist or a political science expert or something like that. ठीक है, उसके लिए जाना करना है तो आप मास्टर्स करो जाके, जेएनयू वगैरह जाओ, ओके. बट इंटरेस्ट सबसे पहला पार्ट है, इट शुड बी द फर्स्ट वन, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट होता तो वी वुड हैव टेकन द सिलेबस इन अवर ग्रेजुएशन ओनली, ओके. बट इंटरेस्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोर. स्कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड स्कोर के हिसाब से इफ यू सी एंथ्रोपोलॉजी, you can see that anthropology has one of the greatest success, at least in last 5 to 7 years. Anthropology has given a very decent result in last 5 to 7 years, and there is no reason that this success rate is going to get declined. अब इसका रीजन क्या है कि मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर कि ये घटेगा या बढ़ेगा एंड ऑल दैट, बट आई कैन टेल यू एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी काफी ऑब्जेक्टिव पेपर, objective paper as if one question has only one answer. Opinion based questions are least possible or minimum, and since opinion based questions कम है और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, and when you can write that answer, the discretion of the examiner is minimum. क्योंकि आप ओपिनियन बेस्ड में ओपिनियन कैन वेरी, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन भी काफी ज्यादा हाई हो जाता है, that he can either give you 3 marks or he can give you 9 marks also. It's completely discretion based marking. But here since the question has only one possible answer, तो अगर आपने वो आंसर लिखा है तो डिस्क्रिप्शन के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे. And that is why if you have prepared this subject well, the chances of luck factor, okay, and getting butchered up and all that stuff is very less. So if you have prepared anthropology well, I can guarantee you that there is a minimum threshold marks that you are supposed to get. I'm not saying that कि 350 आ ही जाएंगे, but I can tell you that if you are prepared properly, you have done previous year questions, you have done each and everything that is suggested to you, that is expected out of an aspirant, you will minimum get 270 to 80 marks. ये तो sure आ ही जाएंगे, if not 300. ठीक है, even in the worst scenario for anthropology, that completely depends on your preparation. Second is interest. Interest सबसे ज़्यादा important इसलिए है because choosing the anthropology is just like marriage. ठीक है, आप अपने लिए हस्बैंड या वाइफ चूज कर रहे हो, एंड सिंस मैरिज में क्या होता है कि डिवोर्स इंडिया में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, सो इफ यू चूज अ रॉन्ग पर्सन एज योर लाइफ पार्टनर, योर लाइफ बिकम्स अ हेल, ओके, और उसको उसके साथ भी नहीं रह सकते और उसको छोड़ भी नहीं सकते, एंड द सेम विल बिकम द केस विद द ऑप्शनल. इफ यू चूज अ रॉन्ग ऑप्शनल, इट कैन एक्चुअली मेक वंस लाइफ अ हेल. इतना टाइम एफर्ट लगाने के बाद आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और उसके साथ आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा. तो इन ऑर्डर टू स्टिक विद दैट ऑप्शनल, यू शुड चूज सम ऑप्शनल दैट यू कैन एटलीस्ट रीड फॉर 2 मिनिमम ईयर्स. उसमें इतना इंटरेस्ट होना चाहिए दैट इट कैन बाइंड यू फॉर दैट 2 years.
आपके पास हमेशा कुछ स्कोप हो और डिस्कवर करने का, कुछ नया जानने का, एंड दिस कैन बी ए वैलिड केस विथ एंथ्रोपोलॉजी। पहली चीज तो आप लोगों ने जो देखा कि इतने वेरिड ब्रांचेस हैं, पेपर 1 में ही 4 ब्रांचेस हैं, सोशो कल्चरल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। So the moment you start getting bored from socio-cultural anthropology, we will be moving on to physical anthropology. And जैसे जैसे physical anthropology का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो then we move on to archaeological and linguistic. And the moment theoretical aspect becomes very much heavy, we move on to India, caste, tribes, village, wherein you will be easily relating it with yourself. आपके अपने personal experiences जो आपने गांव शहर में देखा है, कास्ट को लेके, ट्राइब्स को लेके, वो आप बेसिकली यहाँ पे रीड करोगे एंड यू विल फील मोर connected to it, and that's why it's one of the most interesting subject in the entire list of UPSC optional subjects, and that can easily make you stick with it at least for 2 minimum years. आप बोर नहीं होगे सब्जेक्ट से, you will always have that curiosity to know more and more. Okay, then third advantage, less syllabus. जो सब लोग बोलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को लेके ये थोड़ा मिथ है कि सिलेबस थोड़ा छोटा है, आई डोंट वांट टू ब्लफ यू। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस छोटा नहीं है, लेकिन एकदम प्रिसाइसली मेंशन्ड है एंड देयर इज नो हिडन पॉइंट्स इन इट। ऐसा नहीं है कि एक लाइन के मल्टीपल उसको कहीं किसी लेवल तक जाके एक्सप्लोर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सिलेबस हैज बीन मेंशन्ड स्पेसिफिकली टू द पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस मेंशन्ड है। सो इफ यू कवर इट पॉइंट बाय पॉइंट, देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट एनी क्वेश्चन दैट इज वेरी मच हिडन माइट कम। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, बट चांसेस आर वेरी मच मिनिमम। Okay, plus the topics are very much interrelated or interlinkages is very high. So if you read something in paper 1, you will be using a lot of it in paper 2. ऐसा नहीं है कि paper 2 is completely different from paper 1. So it takes me around 80 lectures to complete paper 1, while it takes me around 30 to 35 lectures to cover paper 2. Why? Because most of the things that we have read in paper 1 will be recalled in paper 2. And due to this interlinkage, the syllabus becomes compact. तो ऐसा नहीं है कि ओपन थ्रेड्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएंगे और कितना भी बड़ा सिलेबस हो सकता है, विच इज द केस विथ अदर ऑप्शनल, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है, वो किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सपैंड किए जा सकते हैं। बट हियर इट इज वेरी मच प्रिसाइज टू द पॉइंट सिलेबस मेंशन्ड है, छोटा नहीं है, बट येस वंस यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट टू ए सर्टेन एक्सटेंट, you will easily be able to means आपको 90-95% of the questions that will be coming in your exam will easily be you will easily be able to attempt it, so कोई problem नहीं आएगी। Then comes resource, you know it, resource तो बहुत सारे present हैं यहाँ पे, be in terms of classes, be in terms of materials, everything। Anthropology के लिए you don't have to struggle for resources, it's not something that is hidden, और mentorship वगैरह भी बहुत easily available है। So in that case also anthropology tops। Then overlap, so when we see overlapping, तो let's talk about 3 areas जहाँ पे overlapping आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहला prelims में देखते हैं। So in last 2-3 years you must have seen there are more questions from science and tech, specifically biotechnology in prelims, 5 to 6 questions सीधे सीधे biotech से आ रहे हैं। And this part of biotechnology, DNA, RNA and all that, this is something that we are supposed to read in physical anthropology. And this 5-6 questions in prelims can make you or break you. सीधे सीधे questions हैं, and normally science and tech हम वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में GS में इतना नहीं पढ़ते. Nobody gives that much emphasis on science and tech. But अभी questions they are shifting towards conceptual clarity and खास करके biotech में, which will be reading in फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये वाला पार्ट आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प करता है। देन एस्से, हर साल देर इज सम इशू, सोशल इशू दैट विल बी आस्क्ड इन एस्से। एक पूरा सेक्शन होता है सोशल इश्यूज के ऊपर, मे बी वुमेन, मे बी कास्ट, मे बी कल्चर, समथिंग लाइक दिस, एंड दीज ऑल आर द टॉपिक्स दैट वी आर सपोज टू रीड इन एंथ्रोपोलॉजी इन मोर डिटेल। पूरा कल्चर के ऊपर हम लोग देखेंगे, देन जेंडर इश्यूज, कास्ट रिलेटेड इश्यूज, पूरा पेपर 2 में ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज, ऑल दैट विल बी कवर्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको एक एस्से हर साल एंथ्रोपोलॉजिकल डायमेंशन से आप डेफिनेटली आपको आंसर करने में हेल्प मिलेगी। देन सोशल इश्यूज अगेन ऑन द सेम टॉपिक्स, पेपर 1 जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक,
मेंस में लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं. ओके, सो दीज आर द एरियाज दैट डेफिनेटली जो ओवरलैप करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के साथ. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस विथ एंथ्रोपोलॉजी. अब कोई सब्जेक्ट है तो एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, उसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो थोड़ा सा ये पार्ट हो जाता है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस भी हो जाती हैं विच आप लोगों को थोड़ा सा रटना पड़ेगा. बट दिस इज अगेन आई वुड से एन एडवांटेज रादर देन डिसएडवांटेज, बिकॉज व्हेन देयर आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस, so if these questions come, so you just have to reproduce that factual information. वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कोई ड्राइंग आर्ट वगैरह कुछ नहीं. ओके, इट्स जस्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन that has to be reproduced in toto. And when you do that, the examiner, अगर एक क्वेश्चन है उसका एक स्पेसिफिक आंसर है एंड यू हैव रिटन इट, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर का डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव स्कोर्ड 180 मार्क्स इन ईदर ऑफ द पेपर आउट ऑफ 250 because of objective questions. Okay, so these are some of the reasons why you should go for anthropology. Okay, and the last one, how we are going to proceed with anthropology. So just एक general structure हमारी classes कैसी होंगी और किस किस तरीके से हम लोग proceed करेंगे, and what I will be giving you, and then I'll take your questions. So we'll start with unit 6, paper 1, theories. So any particular discipline will have its foundation based on certain theories. जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो you read certain basic theories, laws of motion आप पढ़ते हो, and then you will be using these theories to understand other aspects, right? ऐसे ही हम लोग theories पढ़ेंगे and then we will be using these theories to understand various aspects of culture like marriage, kinship, family, economy, polity and all that stuff. Okay, so these are the basics ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. अगर आपको ये समझ, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बट अगर आपको ये समझ में आता है तो रेस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी विल बी अ केक वॉक फॉर यू. कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना, एंड ये आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी आपको सीरियसली कुछ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती. आप हर चीज इसके थ्रू देख पाओगे. दीज आर काइंड ऑफ लेंसेज टू व्यू अ पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना. ठीक है, तो ये इससे शुरू करेंगे. देन वी विल बी मूविंग टू यूनिट 5, 3, 4 एंड 2. These are socio-cultural anthropology, and then we will be moving to physical anthropology. That will end up the paper 1, and then subsequently paper 2 में I'll be starting with caste and village, and then we'll be moving to tribal India. So approximately 110 to 15 lectures will be there of 2.5 hours. ठीक है. Second thing, daily answer writing after few days, means पहले दिन से तो आप आंसर लिखने के काबिल नहीं होते हो. So after say 5 to 6 lectures, when we cover 2-3 theories, we'll be starting with answer writing practice. So at the beginning of the class or maybe after the class, I'll be giving you some questions that I'll discuss here before beginning the class. Okay, and that is what I believe is more necessary rather than test. क्योंकि अभी आप लोगों को मैं कोई टेस्ट दे भी दूं तो अभी आप लोगों की mental capacity इतनी नहीं है. You don't have that much of capacity to write 15-10 test questions in one go. आप 2-3 क्वेश्चन में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ सम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड लेटर ऑन वी विल बी गोइंग फॉर सम सेक्शनल टेस्ट. ठीक है, so this is how we are supposed to cover anthropology. हमारे एंड से 5 days a week class होगी. We will be starting from 25th of April and then we will be ending by September mid. So 4.5 to 5 months का क्लास होगा ये पूरी. So this is all from my side. Please आप लोगों के जो भी questions हैं please feel free to ask. हाँ, yes yes yes. आज से ओरिएंटेशन है because most of the people they wanted some time to think कि एंथ्रोपोलॉजी लेना है कि नहीं लेना है. So this 1 week is to let them decide. अगर कहीं और ओरिएंटेशन है, कोई और चूज करना देखना है तो आप सोच सकते हो. टाइमिंग विल बी 11:30 to 2 PM. एनीथिंग एल्स? यस, एनालिसिस. देखो एनालिसिस में ऐसा कोई एनालिसिस जैसा कोई ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि इंटेलेक्चुअली
मैं बैठूंगा, पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा. यू विल बी टॉट अ टॉपिक, यू नो कि कौन सी यूनिट में पढ़ा रहा हूँ. यू जस्ट लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट यूनिट and try to find out whether you are able to answer those questions from the content that is delivered in the class. If yes, definitely we are moving on the right track. अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, आपके कंटेंट से नहीं हो रहा आंसर. ओके, यस, एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन नहीं है? यस. या देखो, वो तो जिंदा होंगे तभी पता चले, मतलब फ्यूचर का कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे. जिंदा होंगे तो पक्का करेंगे. तो यस, मोस्ट प्रोबेबली बाय अगस्त. नहीं नहीं, टाइमिंग तो आई प्रेफर मॉर्निंग टाइम ओनली, क्योंकि फिर ऐसा हो गया होता है कि शाम को अगर क्लास शुरू करूँ तो मैं पूरे दिन तक एंगेज रहता हूँ. आई कांट डू एनीथिंग एल्स. इफ द बैच इज एट 5 PM तो मुझे सिंस पढ़ाना है तो पूरे दिन मेरा एंगेज चला जाता है. सो आई प्रेफर मॉर्निंग बैचेस ओनली. तो अगर क्लासेस होंगी तो ये 11:30 इसी रेंज में होंगी, या फिर इससे भी सुबह होंगी अगर होंगी तो. कितने लोग हैं ऐसे? आप लोगों की क्लास कब से है? अच्छा, आपसे तो मैं मिला हूँ, बात हुई है. प्रीपोन थोड़ा मुश्किल है. और आप बाकी लोगों का? हाँ, तो 11:30 तो एनीवेज हम लोग शुरू कर रहे हैं. हाँ, 11:30 मेरा टाइम अभी तो यही है फिलहाल. एंड सिंस ओनली 2 or 3 people आर देयर, तो मतलब आप लोग प्लीज़ अगर किसी और तरीके से मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन वगैरह से, तो यू कैन लुक फॉर इट. और यू हैव सर्टन अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, आप वहाँ पे भी देख सकते हो. एनीथिंग एल्स? रिसोर्सेज, यस, आई विल बी गिविंग सम हैंडआउट्स, टॉपिक वाइज होंगे वो. when I'll be covering some topic, I'll give you the handout in that specific class only, plus some dictation will be there. ठीक है, क्लास में आई यूजुअली 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो लाइक गैप्स में और इन 30 मिनट्स के आसपास का डिस्कशन डिक्टेशन होता है पूरा. ठीक है, वेर इन आई विल बी टेलिंग यू सर्टन टॉपिक, सर्टन कंसेप्ट्स, एंड देन आई विल गिव यू अ शॉर्ट नोट इन डिक्टेशन. तो दैट टू विल बी द बेसिस फाउंडेशन ऑफ योर नोट्स और जो भी आपका कंटेंट होगा. once you are done with my content, ठीक है, एक बार ही पूरा बैच खत्म हो जाता है, आप मेरा कंटेंट पूरा एक बार ढंग से रिवाइज कर सकते हो, कंसोलिडेट कर लिया है. उसके बाद यू कैन लुक फॉर सम अदर सोर्सेज की कुछ नए केस स्टडीज, वो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी कंटेंट है दैट आई पोस्ट ऑन माय चैनल्स ऑन ए रेगुलर बेसिस. कुछ भी नया कंटेंट आता है तो मैं समरी के साथ उसको पोस्ट कर देता हूँ, तो आप चाहो तो उससे भी ऐड कर सकते हो. एंड देन देयर आर मल्टीपल अदर सोर्सेज. ठीक है, बट पहले जो मेरे कंटेंट होगा, क्लास नोट्स प्लस जो हैंडआउट्स होंगे, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रनिंग नोट्स वो सही रहता है, क्योंकि अपनी भाषा में लिखे हुए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश यूज़ करेंगे तो आप वो लिखोगे तो आपको उसको ग्रास्प करने में इजी रहेगा. तो व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स इज कि लाइक अपने जो भी कॉपी है उसको, पेज को हाफ हाफ में फोल्ड कर दो. एक जगह पे आप रनिंग नोट्स बनाओ और एक जगह पे जस्ट राइट द डिक्टेशंस. ठीक है, तो आपके फेयर नोट्स भी बगल में ही होंगे और बगल में रनिंग नोट्स वगैरह भी बने होंगे. हाँ डिलीवर, लेकिन रनिंग नोट्स आपको हेल्प करेंगे ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आई विल बी डिक्टेटिंग से 500 वर्ड्स, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में आई कैन स्पीक लाइक 5000 वर्ड्स. ओके, सो 500 वर्ड्स जो डिक्टेटेड होगा वो तो काफ़ी शॉर्ट समरी होगी. आई कैन नॉट डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग, राइट. तो अब उसको अगर आप रनिंग नोट्स बनाओगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी हो रहेगा. कंसेप्ट वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं. एनीथिंग एल्स? आपका नाम, पूरा नाम? ओम अभिषेक. आपको हनुमान चालीसा याद है? कोई पूजा पाठ याद है? प्रेयर याद की थी कोई स्कूल में? जनगण मन कैसे याद हुई थी? डिड यू सिट एंड बैठ बैठ के 4-5 बार पढ़ा और रट गए, ऐसा किया था? कैसे याद हुई? एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर. यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. एंड जब आप रिवाइज करोगे
तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में आ जाती। ठीक है, आप रटने के मोटिव के साथ पढ़ोगे तभी आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप इस मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे मुझे रटना है, इट विल नेवर हैपन। दिस इज द केस विद जीएस ऑल्सो, कि आप ये सोच के बिल्कुल पढ़ो ही मत कि मुझे रटना है इसको। ओके, आप बस रीड करो, ट्राई टू डेवलप दैट बेसिक स्ट्रक्चर इन योर माइंड, एंड विथ मल्टीपल रिविजन, मे बी 5 to 6 रिविजन, you will be able to retain maximum part of it, at least enough to write in the mains exam or enough to solve a question in prelims. तो जो exactly मैं बता रहा हूँ 100% तो कोई भी याद, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो पता है कि मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, और आप इतना याद कर लोगे दैट यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जाम। ओके, शुरुआत में इट विल बी 5 days a week, लेटर ऑन आई ट्राई टू, अगर सिलेबस टाइम पे नहीं हो रहा होगा या हम लोग थोड़ा लैग कर रहे होंगे तो जस्ट टू रैप इट अप, एंड में 6 days a week। थोड़ा तेज बोलना। हाँ, अब वैसे वाले केस में तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट डिस्क्रिशन, गवर्नमेंट ऑर्डर्स कैसे आते हैं। अगर वो ऑफलाइन क्लासेस जब तक अलाउ करेंगे तब तक वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू हैव दिस। वी आर पेइंग सो मच ऑफ रेंट फॉर दिस बिग क्लासरूम, तो हमें तो अच्छा ही है कि आप लोग आओ यहाँ पे। Alternative live classes will be there as long as there is some kind of lockdown. Anything else? वो बताया आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग प्लस कुछ सेक्शनल टेस्ट वगैरह होंगे वंस बल्क पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। Somebody is asking that do we have to buy some reference book like Peanut before the class begins? No, I would suggest don't buy any reference book unless and until I tell you to do so. और रेफरेंस बुक में 2 books I would ask you to buy. One is LP विद्यार्थी and the second one is in related to paper 1, सुरिंदर जोधका की एक किताब है, that I'll ask you to buy. But वो भी जब जरूरत होगी then I'll ask you to do that. Okay, why? Because I am not an author, to be very honest. मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। टीचर का काम क्या होता है कि वो कंटेंट पढ़ता है एंड आपको वो कंटेंट डिलीवर करेगा। So when I'm not an author, so whatever content I will be giving you will not be completely of my own. वो भी इन्हीं सोर्सेज से बनी हुई है। So you don't have to do that extra effort कि वो बुक से भी पढ़े और यहाँ से भी पढ़े। That will be from my side, वो एक जगह पे कंपाइल होके आपको मिल जाएंगे। Okay. Anything else? ऑनलाइन कोर्स इज एक्सेसिबल ऑन लैपटॉप या फिर मोबाइल ब्राउजर पे, कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं है अभी तक। ठीक है, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर डाउट्स। अगर बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो यू हैव माई नंबर, या टेलीग्राम पे आप लोग मेरे को मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वी कैन टॉक। नंबर या रील, ठीक है, टेलीग्राम का आईडी मेरे को याद नहीं है, आप मेरे को पिंग कर दोगे तो मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू।